Hello and welcome students to Pulse IAS. So guys, we are continuing with the day 4 of Prelims Funnel program, and in this we are discussing 1000 plus economy MCQs as part of building your objective aptitude. Because by now we have tried to build a solid foundation, a solid knowledge through 200 plus hours of lectures and the 9 bestseller handwritten notes for prelims. अब क्या आपको लगता है कि सो मेरा पढ़ने से अगर मेरा प्रीलिम्स निकलने होता तो भैया जो थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उन्होंने तो काफी पढ़ा होगा, तो क्यों अभी भी उनका प्री नहीं निकल रहा है? क्योंकि नॉलेज सिर्फ एक कंपोनेंट है. The second component here starts is aptitude, and this discussion of MCQs is a part to build that objective aptitude in your mind. जिसमें इकोनॉमी में अगेन आई एम reiterating 1000 plus economy MCQs are being discussed at 4 levels, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका. And our today's discussion guys, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली है. हम लोगों ने MT1 देख लिया है, MT2 देख लिया, MT3. Today's discussion is about public finance and in the public finance fiscal policy. तो इन सब टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले. The MCQs we are going to discuss is going to check your concepts, build your concept learning, reinforce that conceptual learning जो आप लोगों ने लेक्चर्स और नोट्स में देखी. Clear? तो आप लोगों को क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं, सो वेयर यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन गो टू द मेंटर्स हट पोर्टल. क्लियर? जहां पे आप क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप गए माइलस्टोन 1, क्लिक ऑन MT4 प्रैक्टिस, एंड लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस फॉर द टुडेस सेशन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम? सी, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में काफी डिटेल में बताया था हाउ टोटल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड. हाउ टोटल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू पब्लिक डेट, देन यू हैव पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज, and extra budgetary resources. So we have discussed in detail about each and every aspect of the liability. और अभी जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन is asking only about public account liabilities. Public account liabilities comprises of the public money that the government has taken from the people in the form of small saving schemes, in the form of state provident fund. So that is the public money. That public money which has been taken by the government from the people, from the common people, and giving them returns, definitely giving them returns. All that is a kind of liability on the government. Why it is a liability? Because it has to be returned back. वो सब लायबिलिटीज आपकी कहलाती हैं पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज. क्लियर सर? अब इस पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? पहला, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, बिल्कुल सही, दैट विल कम. सेकंड सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स. नो, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स, दैट मींस द लोन्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पब्लिक डेट के अंदर आता है. क्लियर? दिस इज रॉन्ग. सर, डिपॉजिट्स अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यस. The deposits that have been given under the public provident fund, that is also a public account liability. And third, sir, securities that have been issued against the small savings, that is also a public account liability. ये सब चीजें 1, 3, 4 will come under the public account liability. Clear? So the correct answer is Bombay. Next. Sir, which of the following documents are tabled in the parliament along with the annual financial statement? Clear? Along with the annual financial statement. So, annual financial statement is mentioned under Article 112 of the Indian Constitution. Let me tell you, budget is nowhere mentioned
in the Constitution. It is actually the annual financial statement that is laid down. Now, along with the annual financial statement, FRBM Act 2003 says, FRBM Act 2003 says that government has to table certain statements, 3 statements along with annual financial statements. And what is that? First is fiscal policy strategy statement. Second is medium term fiscal policy statement. Third is macroeconomic framework statements. All these 3 statements ये किसने mandate किया है? FRBM Act 2003. FRBM Act 2003 mandated the central government to lay down these statements also along with annual financial statement. But then FRBM Act got amended in 2012. FRBM Act got amended in 2012, which we commonly referred as FRBM 2.0. Even that FRBM Act also says that one more statement to be tabled along with annual financial statement. Its name is medium term expenditure statement. Medium term expenditure statement. Clear? Sir, what about the economic survey? Economic survey is not tabled along with annual financial statement. This is based on convention, and just generally it is tabled one day prior to the budget document. So correct answer would be C, 1, 2 and 3. Next. So with reference to the budgetary process in India, consider the following statement. Union budget is presented by the finance minister on the last week of February. No, this is wrong. So let me give you one great insight about this. Dekho, Article 112 confers the responsibility, constitutional responsibility. Article 112 confers the constitutional responsibility on President to ensure constitutional responsibility on President to ensure that annual financial statement is laid down before both houses of parliament every year. ये responsibility President पे किसने डाली है? Article 112. But yes, on behalf of the President, actually it is the finance minister that presents the budget. Now the next point is, sir, the date of presentation of budget. क्या ये कहीं पे mentioned है constitution में? No. But one rule says the budget will be presented on the day as decided by the President. So one rule says that the budget is presented on a day as decided by the President. Earlier, the budget was presented on the last day of February, but 2017 से the budget is presented on the first day of February. तभी आप देखते हो 1st February को budget present किया जाता है. Clear? So this is first is false. Second, sir, the finance bill is introduced and passed by the Rajya Sabha before being sent to the Lok Sabha for voting. This is completely wrong. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, sir, ये जो finance bill है, sir, it is an example of money bill under Article 1110 clause 1. Sir, ये जो finance bill है, this is an example of money bill under Article 110 clause 1. Sir, this is introduced. No, it cannot be introduced in the Rajya Sabha. It can be introduced only and only in the Lok Sabha. And Rajya Sabha can give amendments, can suggest amendments, but it is not up to the Lok Sabha. Sorry, it is up to the Lok Sabha whether to accept the Rajya Sabha amendments or not. So it is not necessarily it has to be passed by the Rajya Sabha. But more importantly, it cannot be introduced in the Rajya Sabha. It can be introduced only in the Lok Sabha. So this is wrong. Clear? The appropriation bill legally authorizes the government to withdraw funds from the CFI. Perfect. This is article number 114. Article 114 clearly says
नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द CFI एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। उस प्रोविजन का मतलब ही सिर्फ ये है दैट द पार्लियामेंट हैज टू पास द अप्रोप्रिएशन बिल टू एंश्योर दैट ओके नाउ द फंड्स आर अलाउड टू बी टेकन आउट फ्रॉम द CFI। So the correct answer would be 3 only। लेकिन आप ये देखो all of these things, अच्छा ये पल्स 3.0 हैंड रिटन नोट्स का चैप्टर 4 पब्लिक फाइनेंस, all of these things you see, ये सब चीजें देखो हमने यहां पे कवर की। बजट के बेसिक प्रोविजंस, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, no money shall be withdrawn from the CFI except under appropriation made by law। Then we have money bill can be introduced only in the Lok Sabha, ठीक है। Next, budgeting process में budget presentation to the parliament on such date as fixed by the president in 2000 from 2017 it is the first day of February। क्लियर? तो सब चीजें ऑलरेडी आपकी दी गई हैं नोट्स में एंड काफी ज्यादा डिटेल में हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इट इज अबाउट डिमांड फॉर ग्रांट्स। Demand for grants, guys, it is mentioned under Article 113. Demand for grants is mentioned under Article 113. Demand for grants is presented to the Lok Sabha, yes, and it includes both charged and non-charged expenditure, correct? और सर ये किसने बोला है कि जो expenditure है that has to show separately the charged and non-charged expenditure, it is mentioned under Article 112 of the Indian Constitution, that the expenditure should show separately the difference between charged and non-charged expenditure. It is clearly mentioned under Article 112. I hope आप लोगों का पॉलिटी अच्छा होगा, आप लोगों को पता होगा that whose expenditure is charged upon CFI. Clear? Charged expenditure की meaning क्या होती है? I'm not going to discuss here. Then Rajya Sabha has the power to vote on the demand for grant. This is wrong. Rajya Sabha do not have the power to vote on the demand for grants. Clear? Guillotine process ensures that all the demands are discussed in detail. Again, this is wrong. Sir, guillotine का purpose ये होता है that demand for grants जितनी भी बची हैं, they are put together without any discussion, passed to vote. They are put together for a single voting. They are passed without any discussion. Guillotine का purpose ही होता है। Clear? So the correct answer is A. That is, sorry, C, 1 only. Okay, the first statement is right. Next, which of the following does not fall under the category of capital receipts? अगर आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कैपिटल रिसीट्स बताई है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either results in increase in liability or decrease in assets. The capital receipts are those receipts which either results in increase in liability or decrease in assets. The receipts which either results in increase in liability, sir, those receipts are called debt creating capital receipts. And those receipts which results in decrease in assets, it is known as non-debt creating capital receipts. Clear? So, sir, borrowing by the government from RBI, sir, it come under the category of capital receipts. So this is false. मतलब ये correct statement नहीं है. Because borrowing by the government from RBI, it come under the category of capital receipts, and capital receipts में भी अगर मैं बताऊं, it come under the debt creating capital. Sir, the loans received from foreign governments and international organization, even sir, this fall under the debt creating capital receipt, तो ये भी नहीं होगा. Interest and dividend on investment made by the government, this is right. It do not fall under the category of capital receipts, sir. ये आपका पता है किस में आता है? रेवेन्यू रिसीट्स में, और रेवेन्यू में भी किधर? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है सर। डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, सर अगेन ये भी तो कैपिटल रिसीट्स में है। सर ये किधर आएगा? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक
those here, ये भी तो liabilities है, अभी तो बताया. So correct answer would be A, 3 only. ठीक है, next. So consider the following items. Which of the above are the main items of revenue expenditure? The first one, interest payment on debt. Let me tell you guys, this is the largest item of expenditure. Largest item of expenditure. Grants given to the state government. Yes, even this fall under the revenue expenditure. Salaries, subsidies, pensions, all of the above are the if I talk about, they are the main items of revenue expenditure. आई थिंक मैं यहाँ पे 4 लगाना भूल गया सी ऑप्शन में. इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, expenditure, grants given to the state government, yes. Salary, subsidies, pensions, I think C ऑप्शन को गाइज आप लोग जो C ऑप्शन है उसको 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर दे. ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूं एक बार पीडीएफ में क्या दिया हुआ है. जस्ट अ मिनट. पीडीएफ में ठीक है, आई थिंक यहां पे ना. तो द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये सिंपल डेफिसिट्स के बारे में समझाया है. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स भी पढ़े हुए हैं और आप लोगों को मैंने जब टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स पढ़ाया है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था और आप लोगों ने देखा होगा कि वैसा ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड प्रीलिम्स 2025 में है. ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेवेन्यू डेफिसिट refers to the excess of government revenue expenditure over revenue receipts. Perfect. ये definition दी है directly revenue deficit की. Fiscal deficit, basically revenue deficit equal to revenue expenditure minus revenue receipt. Fiscal deficit is the difference between the total expenditure, that is revenue plus capital, minus total receipts excluding borrowing. ये डेफिनेशन है. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, डेफिनेशन ही पूछिए. प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटीज ऑन प्रीवियस बोरिंग, यस, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी. एक ही बात है. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स आर राइट. ऑल 3. ठीक है, next, sir, which of the following could be the possible implications of government incurring a revenue deficit? Which of the following could be the possible implications of government incurring a revenue deficit? So if the government is incurring a revenue deficit, sir, what is the possible implication of that? What is the possible implication? First, sir, government is dissaving. Yes. क्यों dissaving? Because they are incurring revenue deficit. Revenue deficit मतलब आपका revenue expenditure आपकी कमाई से ज्यादा है. आप जो बेसिक अपना consumption के लिए जो खर्च कर रहे हो, maintenance expenditure कर रहे हो, that is more than your regular earnings. So that means the government is dissaving and thereby they are using the savings of the other sectors of economy. Perfect. Clear? अगर revenue deficit ज्यादा होगा तो revenue expenditure मतलब ज्यादा है. So revenue expenditure ज्यादा है, so total expenditure ज्यादा होगा, that will lead to higher fiscal deficit. Very simple logic. Now, sir, अगर revenue deficit ज्यादा है, तो सर उसको finance करने के लिए government को borrowing करनी पड़ेगी. और सर अगर government borrowing करेगी, तो economy से ही borrow करना है, जिधर limited resources है. तो government अगर वहां से borrow करती है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे. रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या कम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे? कम. और प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर कम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, सो देयर बाय दे विल नॉट बी एबल टू बोरो फ्रॉम द इकोनॉमी एंड दिस रिड्यूसेस द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट.
crowding out. Clear? So basically government borrowing will be used for consumption requirement. This is correct. And this can lead to crowd out private investment. Okay? और गवर्नमेंट बोरोइंग क्यों कर रही है? मीटिंग देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. अगर आप लोगों ने क्लास देखी है प्रॉपरली फिस्कल पॉलिसी की, यू वुड हैव अंडरस्टूड कि रेवेन्यू डेफिसिट में जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इन दैट रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गाइस, ये कंजम्पशन या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. इट इज नॉट समथिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं इट इज गोइंग टू जनरेट रिटर्न्स, बट ये जो एक्सपेंडिचर इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट रिटर्न. That's why we call this expenditure as consumption or maintenance. Clear? So the correct answer is 1, 2, 3. All of the above. C. Okay? C. Next. Sir, with reference to monetized deficit. Sir, what I mean by the monetized deficit? अब आप मुझे बात बताओ कि गवर्नमेंट का डेफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है. A fiscal deficit है, that means expenditure is higher than the earnings. अब जब expenditure is higher than the earnings, there is one way of financing that extra expenditure. How? By dialing the number, by dialing to the RBI and says, hey RBI, listen, print the currency. This method of asking the RBI to print currency for financing their fiscal deficit is known as monetized deficit. This method of asking the RBI to print money for financing the fiscal deficit is known as monetized deficit. Clear? So monetized deficit is an indicator of the extent to which the government is relying on the central bank to finance its deficit by printing money. Yes, sir, it increases the money supply. Definitely, it directly increases the money supply. मैं आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया हूं कि ये जो मनी सप्लाई बढ़ता है, दिस मनी सप्लाई इज एक्चुअली हाई पावर्ड मनी, M0 increases. Clear? And this high monetized deficit can lead to deflationary pressure? No, this actually lead to inflationary pressure. And inflation ultimately affects whom? Affects the vulnerable, poor and vulnerable. इसीलिए this practice, monetized practice, the practice of monetized deficit was stopped in 1997, and then a statutory ban has been put on in 2003 FRBM Act. 1997 में this practice of monetized deficit was stopped, लेकिन उस practice को एक statutory status दिया गया in 2003 FRBM Act. So correct answer is 1, 2. Only 2. ठीक है? Next. Sir, which of the following are potential outcome of extensive deficit financing? Extensive deficit financing means higher amount of borrowing to finance the fiscal deficit. To finance the fiscal deficit. Clear? Deficit financing refers to the sources through which you finance the fiscal deficit. Now, if there is an extensive deficit financing, that means the government has to resort to high level of borrowing. एक तरीका तो यही है, दूसरा तरीका ये भी है, asking the central bank to print currency. So these are some of the methods to finance the fiscal deficit. Now, in this case, whatever this case, don't you think this is likely to increase inflation? Yes. क्यों? यार, overall government expenditure has been high. सर, अगर government expenditure high होगा तो aggregate demand ज्यादा होगी, aggregate demand ज्यादा होगी तो inflation ज्यादा होगा. Clear? सर, अगर government borrowing ज्यादा होगी तो public debt ज्यादा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा. Government पे debt बढ़ेगा. The crowding out of private investment, अभी समझाया था कि private investment they will be crowding out. क्यों? क्योंकि सपोज करो इकोनॉमी में 100 रुपए, उसमें से अगर गवर्नमेंट ने 40 रुपए ले लिए तो बाकी सेक्टर के लिए कितना बचा? प्राइवेट सेक्टर के लिए 60.
प्राइवेट सेक्टर कहेगा नहीं यार, मैं 60 नहीं चाहिए, मैं खुश नहीं हूं, मेरे को 100 चाहिए. So private sector, then what it will do? It will be like, I am not going to borrow. So kahin na kahin they will be discouraged to borrow, and thereby restricting the private investment in an economy. इसीलिए इसको बोलते हैं crowd out, that more government borrowing is going to crowd out the private investment. And sir, this is increase in foreign exchange reserves? No, as such तो देखो लिंक नहीं है, बाकी कोई बिठाना चाहे एक अलग बात है, लेकिन एज सच कोई है नहीं. तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे. ठीक है. नेक्स्ट सर, कंसिडर द फॉलोइंग फिस्कल मेजर्स. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव, हाउ मेनी ऑफ द गिवन अबव मेजर्स, how many of the given above measures are typically associated with fiscal consolidation? A simple concept. Sir, fiscal consolidation नाम से ही समझ में आ रहा है. Sir, fiscal consolidation means consolidating the finance. Yes or no? Consolidating the finance. And that means, how do you consolidate the finance? By reducing the fiscal deficit. तो जो डेफिसिट है उसको कम करो. नाउ दिस डेफिसिट कैन बी रिड्यूस थ्रू टू वेज. वन, ईदर आप रेवेन्यू बढ़ाओ. ठीक है, आप रेवेन्यू बढ़ाओ और आप एक्सपेंडिचर कम करो. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लीड टू फिस्कल कंसोलिडेशन. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट. सो लेट अस सी. इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन लग्जरी गुड्स. सर, इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी और लग्जरी गुड्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा. इंट्रोड्यूसिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स इन पब्लिक स्पेंडिंग. ऑस्टेरिटी मेजर्स मींस हार्श, दैट मींस रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज गोइंग टू रिड्यूस. तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो फिस्कल कंसोलिडेशन. सर, इंप्लीमेंटिंग अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम. दिस इज रॉन्ग. अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इंप्लीमेंट करते हो, दैट विल लीड टू हायर एक्सपेंडिचर. और हायर एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, सो दैट विल गो अगेंस्ट द फिस्कल कंसोलिडेशन. क्लियर? सर, प्राइवेटाइजिंग नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. दिस इज फाइन. पर अगर नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आप प्राइवेटाइज करोगे तो व्हाट यू आर डूइंग? सर, यू आर सेलिंग द एसेट. सर, आप जब एसेट सेल करते हो तो रिसीट्स बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कौन सा रेवेन्यू बढ़ेगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. याद रखो. तो प्राइवेटाइजिंग नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज गोइंग टू इंक्रीज द रिसीट्स. सर, जब आप रिसीट्स बढ़ाओगे तो फिस्कल डेफिसिट कम, एसोसिएटेड विद फिस्कल कंसोलिडेशन. तो 1 2 3. सो हाउ मेनी? 3. Only 3. Clear? So the correct answer would be this. Next. Sir, how many of the given above factors are likely causes of fiscal slippage? Likely causes of fiscal slippage. तो पहले तो आपको fiscal slippage पता होना चाहिए. Fiscal slippage की एक मैं सिंपल सी बात बताऊं. बेसिकली आपने देखा होगा गवर्नमेंट हर बजट में, जैसे 1 फरवरी 2026 पे नया बजट आएगा, गवर्नमेंट बताएगी कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वी आर एस्टिमेटिंग दिस मच फाइनेंशियल डेफिसिट, दिस मच फिस्कल डेफिसिट. हम इतना फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट कर रहे हैं. अब उतना फिस्कल डेफिसिट जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं, बट अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट उससे ज्यादा निकला, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फिस्कल स्लिपेज. तो फिस्कल स्लिपेज मींस दैट fiscal slippage means your fiscal deficit is higher than expected fiscal deficit. Higher than expected fiscal deficit. That we call it as fiscal slippage. तो सबसे पहले sir, slower than expected economic growth. Yes, this is one factor that can cause fiscal slippage. Why? सर, अगर स्लोअर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, दिस इज लाइकली टू रिड्यूस द रेवेन्यू
सर अगर मेरा रेवेन्यू कम होगा, टैक्स रेवेन्यू स्पेशली, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है तो टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन होगा। सर टैक्स रेवेन्यू अगर मेरा डिक्लाइन होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अभी तो मैंने आपको बताया था ना। क्लियर? सेकंड, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स ऑन कॉर्पोरेट इनकम। सर अगर टैक्स रेट्स बढ़ेंगे तो रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज। सर अगर रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा, तो फिस्कल स्लिपेज थोड़ी नहीं होगा उस केस में। हायर देन बजट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स। यस सर, बजट में हमने बोला है 100, खर्च कर रहे हैं हम 150, तो भैया फिस्कल डेफिसिट जो आपने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। सर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, दैट मींस फिस्कल डेफिसिट ज्यादा। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। यस, आप सोचो अगर इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग होगी सो देयर विल बी इनएफिशिएंसीज, देयर विल बी लीकेजेस, देयर विल बी करप्शन। तो ओवरऑल होगा क्या? तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च होना था उससे ज्यादा खर्च होगा, और एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च हुआ, दैट मींस हायर देन एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट। दिस इज आल्सो लाइकली अ फैक्टर कॉजिंग फिस्कल स्लिपेज। करेक्ट आंसर इज 1, 3, 4, ओनली 3। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following are provisions under the FRBM Act 2003? So FRBM Act 2003, yes, first is setting target for the reduction of fiscal deficit and revenue deficit. FRBM Act said that fiscal deficit has to be achieved or to be brought down to 3% of GDP, and this have to be eliminated. Clear? Second, introduction of medium term fiscal policy statement to be presented annually. Yes, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. Banning the RBI from purchasing primary issuance of central government. Yes, जो मैंने आप लोगों को मोनेटाइज डेफिसिट बताया ना अभी, एक्चुअली मैं उसकी रिफाइंड लैंग्वेज में बोलूं तो यही है, जिसकी वजह से, इस प्रोविजन की वजह से इट प्रिवेंट डेफिसिट मोनेटाइजेशन, preventing deficit monetization in India. Clear? So banning the RBI from purchasing primary issuance of central government security. Then amendment to FRBM in 2012 introduced the concept of effective revenue deficit. Perfect. So the correct answer is all of the above. Okay, 1, 2, 3, 4, Delhi. Next, sir, which of the following are considered components of public debt in India? देखो ये पूरी चीज हम लोगों ने पब्लिक डेट को इतना बढ़िया समझाया हुआ है, फैक्ट, आपका फैक्ट्स भी है उसमें। देखो ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ठीक है, आप ये सब देखोगे जो आपको पल्स 3.0 हैंड रिटन नोट्स में जो डाटा है पूरा लेटेस्ट 2025-26 तक का है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस थिंग इज टेकन केयर ऑफ। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, इंटरेस्ट पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट share of expenditure. Please look at this. Largest share of expenditure, 20 rupees. That is interest, 20 paisa out of 1. ठीक है? Then you see public debt. सिर्फ public debt, बाकी सब provisions भी देख लो, सब दिए हुए हैं. Public debt, how it is divided into internal, external. Internal को कैसे divide किया है, marketable, non-marketable, all of these things. Public account liabilities, EBR, की ट्रेंड, जो फैक्ट्स हैं, जो है, all of that is mentioned. So which of the following are considered components of public debt in India? First, treasury bills. Yes, clear? It forms part of the internal debt. Internal debt maybe it forms part of the marketable debt. Then external loans from foreign government. Yes, this is also the public debt, but this will be considered, this will come under the external debt. Special securities issued to financial institutions, guys, let me tell you, this come under the internal debt, but under the non-marketable debt. Non-marketable. Okay? Then tax revenue. Tax revenue is not a component of the public debt. So correct answer is Bombay. Okay? Moving to the next question. Sir, with reference to the public debt in India, consider the following statements.
India's public debt is primarily composed of internal debt which is raised through government security. Yes. तो मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताऊं, जैसे मैंने आपका डिवाइड किया टोटल लायबिलिटीज इज डिवाइडेड इनटू पब्लिक डेट, पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज. नाउ इन दैट public debt is almost 90% of the total liabilities of the government. Public debt is 90% of the total government liability. Clear? That is the major. Public debt is actually the borrowing that is done by the government. Public account liabilities तो वो public money that is taken by the government for mobilizing the small savings of the people. Clear? So public debt may be public debt is further divided into internal debt and external. Internal debt is almost 95%. Internal debt is almost 95%. तो आप ये बात समझो गाइस कि जो गवर्नमेंट जो मेनली डेट मोबिलाइज करता है, दे मेनली बोरो इट फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्स. द गवर्नमेंट मेनली मोबिलाइजेस डेट फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस 95%. And उसमें भी it is mainly raised through the government securities. Basically, इसमें भी marketable debt is more than non-marketable debt. Clear? So, external debt constitutes a small percentage, less than 5%. Clear? The interest payments on India's public debt form a significant part of government revenue expenditure. Significant क्या guys? Largest actually. Largest part of the government revenue expenditure. तो क्या हो गया अपना 1, 2 and 3. Clear? Next, sir, which of the following entities are typically allowed to subscribe to India's government securities? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. अगेन सर ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि कहीं ऐसे मिल जाएगा ना, ऐसी चीजें डिस्कस हुई जाती है क्लास में. नोट्स में तो देखो हमने दिया हुआ है अलग अलग जगह पे, मैं आपको एक दिखा देता हूं. लेकिन ये समझना, ये देखो कंपोजिशन ऑफ पब्लिक डेट. सबसे ज्यादा जो पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज कमर्शियल बैंक, फॉलोड बाय इंश्योरेंस कंपनी, फॉलोड बाय आरबीआई, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल. तो माय पॉइंट इज कि ये चीजें आप बुक से आप यहां तक खुद निकाल लो, या जब मैं लेक्चर में जब हाईलाइट करता हूं यू नीड टू फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ. क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो आपको लगता नहीं होगा यार ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए तो एमसीक्यूज करवा रहे हैं ताकि आपको रियलाइज हो, नो नो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग entities are typically allowed to subscribe to India's government securities? First, commercial bank. Yes, they form the largest, they are the largest composition, they form the largest composition of public debt. Insurance company, yes. Foreign institutional investors, which now is commonly called as foreign portfolio investors, yes. Non-resident Indians, yes. अब सर ये आपने वहां पे तो लिखा नहीं है गाइस, यहीं पे तो ये एक्सटर्नल सेक्टर आ गया. एक्सटर्नल सेक्टर जैसे ही आएगा मैंने वहां पे आपको दो प्रोविजन बताऊंगा, वॉलंटरी रिटेंशन रूट एंड फुली एक्सेसिबल रूट. Voluntary retention route and fully accessible route. Fully accessible route, under the fully accessible route, NRIs are allowed to invest in the government security. FPIs तो VRR में भी है, देखो ठीक है. तो all of the four, लेकिन मैं आपको ना ट्राई करता हूं यहां पे कहीं अगर दिखा पाऊं तो. मैं पेज नंबर डायरेक्ट नहीं जा सकते क्या? पेज नंबर 180 के अराउंड है. So you would realize that even such things are mentioned in the Pulse 3.0 handwritten note. That's why I'm telling you, अगर मैं इतनी confidently से बोल रहा हूं that this is the one single source that you have to cover with respect to your static syllabus and the current जो भी है, जो भी current है नवंबर तक, this is one single source that you have to cover. ये देखो, look at this. अब ये सर एक्सटर्नल सेक्टर है तो मैं इधर ही पढ़ाऊंगा ना, वॉलंटरी रिटेंशन रूट, फुली एक्सेसिबल रूट. देखो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन. फुली एक्सेसिबल में ओनली स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्लियर सर? यहां पे एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है? एनी एफपीआई रजिस्टर्ड विद सेबी. सर यहां पे एफपीआईज, एनआरआईज, ओवरसीज सिटीजन.
हो गया। तो यहां तो आप नोट से खुद ही समझ लो, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स फनल दैट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। इसके बियॉन्ड आई डोंट सी दैट एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, anything that is required, and I can guarantee it here, you won't be needing it. आपका जो प्रीलिम्स निकलना होगा वो इसी से ही निकल जाए। The only thing is you implement it since। अब होता क्या है, ले भी लेते हैं, काफी बच्चे ले लेते हैं, लेकिन वैसे कितने बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर मेरे ये टारगेट्स कंप्लीट हुए सर, ये नहीं हुए। वेरी फ्यू। जब हम स्टार्ट करते हैं तो 100+ स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, करते 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 धीरे धीरे अल्टीमेटली 15-18 स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली टेलिंग अस सर ये टारगेट खत्म हुआ, नाउ सर हाउ कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टारगेट। तो दिसंबर में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक बार, जैसा आपने बोला सर जनवरी से कैसे रिवाइज करें, ऑल ऑफ दैट जबकि दिया हुआ है। तो या तो आप इसमें देख लो या क्लासेस में आप समझ लो, ठीक है। इट इज डेली। नेक्स्ट सर, which of the following best describes the concept of interest rate growth differential? अब ये जो कॉन्सेप्ट है, this concept is mentioned in economics, सर हर साल आएगा, इस बार भी आएगा। Clear? So IRGD is the difference between the government interest rate and GDP growth rate. Interest rate growth differential is the difference between interest rate and the growth rate. So that means सर अगर IRGD निगेटिव है, अगर IRGD निगेटिव है, that means interest rate is less than growth rate. Is it a good sign for an economy? Yes, it is a good sign. अगर IRGD निगेटिव है, it ensures debt sustainability. It ensures debt sustainability, that the debt which we are giving it to you is a sustainable debt. Are you getting my point? ये जो debt रहेगा, that is a sustainable debt. Now when I say sustainable debt, that means the high growth rate will be able to reduce the public debt, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मेरा ग्रोथ रेट। बट इफ आई टॉक अबाउट, अगर मेरा ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ, सॉरी मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ ग्रोथ रेट से, तो IRGD क्या होगा? पॉजिटिव। दिस इज नॉट गुड साइन फॉर इकोनॉमी। So thereby, which of the following best describe the concept of IRGD? It is this, बॉम्बे। ठीक है, तो कुछ चीजें आप ऐसे सीखते हो। नेक्स्ट सर, विथ रेफरेंस टू द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, मैंने आपको एक आइडिया दे ही चुका हूं। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस come under the total liabilities of the government. Clear? These are funds raised by the government through public sector enterprises or special purpose vehicle without reflecting in the union budget. Perfect. To finance the public sector projects without increasing the fiscal. These all are correct. Fully accounted? No, these are not accounted in the government fiscal deficit calculation. So correct answer is Bombay. ठीक है? Very detailed discussed this concept in the class. So the now question is, with reference to the ways and means advances provided by the RBI, consider the following statement. Now ये चीजें भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप एक बार देख लो, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब क्लासेस में, सही जगह पे है। नहीं तो अब हम लोग को बुक याद हो ही गई है, क्यों? ये देखो, तो डायरेक्टली गिवन इतनी इंफॉर्मेशन से ही आपका वो क्वेश्चन आंसर हो जाए, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। आपको लगता होगा सर ये बुक तो बहुत ही छोटी है सर, 240-250 पेज की, बट आई एम टेलिंग यू दिस बुक हैज बीन एबल टू आंसर 80% ऑफ द इकोनॉमी। सर WMAs आर प्रोवाइडेड to both central and state government by the RBI? Yes, correct. But the interest on rate on WMA is always higher than the market borrowing rate. This is wrong. Let me tell you, sir, या तो interest rate is equal to the repo rate or lesser than repo rate. अगर government collateral देती है, अगर government collateral देती है, in that case
the RBI will charge interest rate lesser than repo rate for giving the funds. On the other hand, अगर गवर्नमेंट उसको कोलेट्रल नहीं देती है कि फाइन नॉर्मल WMA है विदाउट एनी कोलेट्रल, so for that the RBI will charge interest rate equal to repo rate. So this is wrong. Clear? And for what duration the RBI provides a fund? Purpose of WMA is simply to meet the temporary mismatch of the government cash flow. To meet the temporary mismatch of the government cash flow. Clear? So the government generally has to repay the WMA within a specified period, that is 90 days. After which it will be treated as an overdraft. Clear? Or overdraft hote hi, for that amount the interest rate will be charged as higher than repo rate. Okay? The correct answer is only 2. Next, sir, which of the following correctly describes about National Small Savings Fund? Again, ये भी दिया हुआ है. The National Small Saving Funds acts as a depository for funds collected through small saving schemes. Yes, like Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra. Correct. Clear? There are 3 types of small saving schemes, guys. 3 types of small saving schemes. One is postal deposits. Postal deposits. Sir, postal deposits में जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेविंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ऑल दैट. क्लियर? सेकंड अगर मैं बात करूं सर, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स लाइक नेशनल सेविंग स्कीम, सॉरी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, लाइक दैट. थर्ड, सोशल सिक्योरिटी like Sukanya Samriddhi. So the money raised under all these 3 goes to a fund known as National Small Saving Fund, जिसपे जो interest मिलेगा to the investors, that is decided by whom? So it is decided by the Ministry of Finance. It is decided by the Ministry of Finance. Clear? So this fund is managed by the RBI? No, this fund is managed by the Ministry of Finance. And under the Ministry of Finance, it is actually the Department of Economic Affairs. Clear? This fund can be used to provide loans to the central and state government. Yes. The returns generated by NSF are distributed to the contributors of small saving schemes annually. No. Correct answer is A. 1 and 2 annually. Sorry, 1 and 2 only. Next, sir, with reference to the effective revenue deficit, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है effective revenue deficit. Effective revenue deficit was introduced in which year? 2012. Clear? This deficit excludes the grant for capital asset creation, providing a clearer measure of the government revenue shortfall. Yes. Yes. देखो, हम लोग जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली वी से इट इज अ कंजम्पशन और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. जनरली वी से द कंजम्पशन और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, है ना. तो जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जनरली वी से इट्स कंजम्पशन. व्हाई आई से इट इज जनरली वर्ड आई यूज इट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम ऐसा होता है which can result in the creation of capital asset. Grants which can result in the creation of capital asset. Clear? So grants for the creation of capital assets. Grants for the creation of capital. इसमें एक एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर ऐसा which is not consumption or maintenance, it is actually considered a capital expenditure, or it is mainly considered a investment expenditure that can result in the formation of capital or capital asset. तो thereby अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि how much money I am earning to finance our consumption expenditure, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मैं लूंगा तो गलत होगा ना. Thereby, effective revenue deficit says that आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से एक एक्सपेंडिचर ये हटा दो, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. अब सर ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट.
तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो अब जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बचा है, अब जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बचा है वो एक्चुअली में कंजम्पशन और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, दैट हैज नॉट एट ऑल एनी इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट। दिस इज प्योरली कंजम्पशन और मेंटेनेंस दैट हैज टू बी, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट हैज टू बी फाइनेंस्ड बाय इट्स अर्निंग्स, दैट हैज टू बी फाइनेंस्ड बाय इट्स अर्निंग। क्लियर? दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए, यस और नो? इट शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ठीक है, अ हाई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट over multiple years indicates that a significant portion of government expenditure is non-productive. Yes, अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, इसका क्या मतलब कि गवर्नमेंट क्यों इतना हाई एक्सपेंडिचर कर रहा है, विच इज नॉन प्रोडक्टिव। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनियन बजट which of the following are included in the effective capital expenditure? अब सर ये भी एक टर्म जो है ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारी बजट डिक्शनरी में आया कुछ साल पहले, आज से आई थिंक 3 से 4 साल पहले ये हमारी बजट डिक्शनरी में एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। सर व्हाट आई मीन विद द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ये भी बोलता है कि आई गॉट द पॉइंट कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो तो आना ही है, लेकिन इफेक्टिव ये बोलता है एक और ऐसा आइटम है जो होना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट में चाहिए, एक और ऐसा आइटम है जो होना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में चाहिए, लेकिन आपने उसको डाला कहां पर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने उसको डाला कहां पर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बट दैट इज रॉन्ग। तो अगर आपको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट करना है तो डू नॉट जस्ट काउंट ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो एड वन मोर एक्सपेंडिचर नोन एज grants for creation, grants to states for creation of capital assets. ठीक है, तो grant in aid given to state government for the creation of capital assets, expenditure on defense equipment and infrastructure, interest payment on government borrowing, no, this is revenue expenditure. Clear? Expenditure on social sector schemes, no, this is again revenue expenditure. So correct answer is A. ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा है तो काउंटर साइक्लिकल है, ये हमने कर लिया ना। नेक्स्ट 23, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी? लेट मी टेल यू गाइस, दिस एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो मेजर्स होंगे दैट इज आल्सो नोन एज फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स। So, in the context of Indian economy, which of the following measures would be considered an expansionary fiscal policy? So, expansionary fiscal policy में जो measures आएंगे, that will also be considered as fiscal stimulus measures. Clear? Fiscal stimulus or expansionary policy means the measures that are aimed to boost aggregate demand. This boosting aggregate demand is possible when the government reduces the tax rates or increasing the expenditure. First, increased government spending on infrastructure projects. Yes. Clear? Reducing corporate tax rates to stimulate business environment. Yes. Introducing new subsidies for agricultural inputs. Yes. So thereby the answer would be, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, which of the given above are the examples of counter-cyclical fiscal policy? I hope आप लोगों को याद है, मैंने बहुत डिटेल में गाइस क्लास में एक्सप्लेन किया था
काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। और आप ये सेम चीज आपको नोट्स में भी मिलेगी। नोट्स में भी अगर आप देखोगे मैंने काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बताया हुआ है, प्रो साइक्लिकल वर्सेस काउंटर साइक्लिकल, और आप ये देखो। ठीक है, चलो काउंटर साइक्लिकल, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग अ रेसेशन। तो अगर जब रेसेशन पीरियड हो रहा है, रेसेशन पीरियड में इसका काउंटर क्या होगा? रेसेशन में जनरली हर कोई क्या करता है? अपने पैसे बचाने की कोशिश करता है, एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये पॉलिसी कौन सी है? काउंटर साइक्लिकल। तो अपोजिट टू द साइकिल, दैट मींस हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यस, करेक्ट, क्लियर। देन रिड्यूसिंग इनकम टैक्स रेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपांशन। अगर आप इकोनॉमिक एक्सपांशन की बात करूं तो इकोनॉमिक एक्सपांशन में सबके पास पैसा है, लोग कहते हैं कि चल यहां भी खर्च करते हैं, ये भी खर्च करते हैं। उस टाइम पे अगर मैंने इनकम टैक्स रेट कम कर दिया तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा, मेरी डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा, तो मेरे पास और पैसा, मैं और खर्च करूंगा नहीं करूंगा? दैट विल बी प्रो साइक्लिकल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काउंटर साइक्लिकल। सो दिस विल नॉट कम अंडर दी काउंटर साइक्लिकल, दिस इज प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक बूम। यस, ऑस्टेरिटी मेजर्स मींस एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड। तो इकोनॉमिक बूम के टाइम पे एक्सपेंडिचर कम कर। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 3, दैट इज ओनली 2, बॉम्बे। Last question. Sir, which of the following statements are correct about the Consolidated Fund of India? It includes all the revenues received by the Government of India. Yes. It is the source of all government expenditure, including the charged expenditure. Bilkul correct. It includes all borrowings and loans received by the government. Yes. It cannot be used for making payments without the prior approval of Parliament. Yes. Article 114. It cannot be used for making payments without the prior approval of Parliament. It requires the prior approval of the Parliament, that is the passage of appropriation bill, before taking the money out, from the CFI. ठीक है? So thereby the correct answer would be 1, 2 and 3, 4. Here we submit all, or this is how 25 करेक्ट है। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों कुछ एक इश्यूज आ रहा है, बट ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, 25 करेक्ट, दैट वी हैव डन इट। ठीक है, तो विद दैट यू कैन व्यू सॉल्यूशन आल्सो। आप ये देखो 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही है। जस्ट लुक एट दिस, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। यू कैन रीड दी सॉल्यूशंस इफ यू विश टू, and this is here we back to question। हम लोगों ने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। So I hope you are enjoying this daily MCQ series of economy, जिसमें 1000+ economy MCQs we are covering at 4 levels, जिसमें अभी हमारा जो चल रहा है level 1, which is conceptual based MCQ। ठीक है, चलो, take care guys, study well, all the best।